Good evening to all of you. केमती अछन समस्ते? How are you all? केमती अछंदी? Uday, number sharing not allowed, but if you have any doubt, then you can talk to me through Telegram live. Please join our Telegram channel. Please join our Telegram channel, OPSC Wallah. So Telegram live way, in live you can directly have interaction with. मोसे तो directly सेठी कथा ही परी. ହେଲା? समस्ते join करी गले? Everyone joined or not? Good evening, Anju, Girija, रूपश्री पीहू भल अच्छे समस्ते आज गोटे छोट टॉपिक अच्छी मो पाखे डिस्कस करिया टॉपिक इज बोथ फ्रॉम पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स रे भी ये टॉपिक रो क्वेश्चन आसे पॉलिटी रे भी आसे देखो छोट हो गला टिके नीति आयोग रो ना समस्ते सुनिथिबे नीति आयोग व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग केबे आस्तिला नीति आयोग कहा को रिप्लेस कला ये सब ऊपर आज डिस्कशन करियो वेरी स्मॉल बट वेरी informative session we will have. Telegram रे live सब बड़े हुए नहीं but केवे केवे हुए you will there will be notification बहुत दिन हला मोर आसे नहीं तो बहुत जल्दी आसियो म होती next week or next week something like that आसियो मोर notification हला First January 2015 correct. Okay so आमे देखुचे पूर्वरु थिला कोन ना पूर्वरु थिला प्लानिंग कमिशन कोन थिला प्लानिंग कमिशन now this planning commission has been replaced by NITI Aayog. Planning commission has been replaced by NITI Aayog. Now NITI Aayog रो एटू क्वेश्चन कोन आसी पारे ना यार कंपोजिशन ऊपर क्वेश्चन आसी पारे फंक्शन ऊपर क्वेश्चन आसी पारे हैला कोन कहली कंपोजिशन फंक्शन ऊपर क्वेश्चन आसी पारे ना एथिरे थांती के ना चेयरपर्सन किए नीति आयोग रो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग की कहियो मते चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर देयर इज अ गवर्निंग काउंसिल की रहिबे ना चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स plus lieutenant governor of all union territories hela then regional councils are there eta kon pai na regional issue pai to address regional issue there are special invitees also specialists with specific domain knowledge कौन specialist पाजा को specific domain knowledge थाई कि specialists are also there member जदि हम एटे देखिबा दी प्रकार member एथिरे अछंती बा तीनी प्रकार भी कहि परिबा members full time members part time members है ना and ex officio members full time members part time member केते ना maximum 2 from 2 leading university रू जो मानकर social science ऊपर research थियो बा research organization नु आस्परि ex officio member 4 members those who should belong to the council of ministers
and they are nominated by the Prime Minister. Nominated by whom? Nominated by the Prime Minister. Hela. CEO is appointed by the Prime Minister for a fixed tenure. CEO is appointed by whom? CEO is appointed by the Prime Minister. Now ये गला member मानक कथा नीति आयोग. Now नीति आयोग principle कौन? नीति आयोग is based on the principle of Swami Vivekananda. Please remember. कौन है उदय एते व्यस्त कहीं? I am preparing for UPSC but have many doubts. ठीक अच्छे. Don't worry. And this is a long term preparation. It is genuine. ए preparation ने जति जने candidate religiously prepare होउची then genuinely doubt आसीबो. So you have doubt, it is there is nothing surprising. So don't worry. आमे देखिबा जहाँ जहाँ डाउट अच्छी कौन नहीं we will discuss. व्यस्त होनी. Don't worry, I will help you. व्यस्त होनी. So NITI Aayog देखिले NITI Aayog is based on the principle of, it is based on the guiding principle of Swami Vivekananda. It is based on guiding principles of Swami Vivekananda. प्रणाम लोपामुद्रा. चलिए कौन कुछ ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट रो अर्थ कौन ना डेवलपमेंट फॉर ऑल. नाउ ये कुछ डेवलपमेंट तो होउची बट देयर आर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक SC ST OBC ना बैकवर्ड सेक्शंस वुमेन बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुमेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. एमान को डेवलपमेंट रो रिजल्ट मिली पारु नाही. कौन होता है एमान को डेवलपमेंट रो रिजल्ट मिली पारु नाही. त कोच हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट. कौन कोचे? दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. Inclusive development रो अर्थ ला including those who are not included or including the excluded section of the society, that is inclusive development. So को माने को एठी ताले इंक्लूड करिया कथा पड़िछि जो माने vulnerable section of society माने कोन कोआ जाय they are called as vulnerable section of society. Vulnerable sections of society. है ना? In sustainable development. Now, sustainable development is environment friendly development. Environment friendly development रो अर्थ कोन? Environment friendly development माने कोन? माने environment रो जेमति लॉस न होतु. आमे देखिले डेवलपमेंट हेले GDP बढ़ुची. More the development, more is the GDP. GDP increase होउची. Now GDP increase हेले देखुचे आमे प्रोडक्शन बढ़िला. प्रोडक्शन बढ़िला आमे देखुचे एटी कोन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ुची. इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन होउची ना एटी इंक्रीज होउची. Now industrialization increase हेले negative impact on environment बढ़ुची. Negative impact on environment बढ़ुची. But this is called unsustainable development. This is called unsustainable development. तो ये कुछ कौन पे ना ये कुछ for sustainable development. Sustainable development means environment friendly development. This is called environment friendly development. बुझिएला तो कहले कोन ना environment, this is called environment friendly development. Now the next is equitable development. Equitable development means holistic development. Equitable development means कोन ना यार अर्थ होती holistic development.
ये गला गाइडिंग प्रिंसिपल, दीज आर द थ्री बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग यही कॉन्सेप्ट ऊपर बेस करे, कौन कहली नीति आयोग यही कॉन्सेप्ट ऊपर बेस कर। So this is based on the concept of human dignity. This is based on the concept of human dignity and national self-respect. National self-respect. And these ideas are based on the ideas of Swami Vivekananda. These are ideas of kahar idea? Na, these are based on the ideas of Swami Vivekananda. बुझिला स्वामी विवेकानंद को आइडिया ऊपर ये बेस करछि ह्यूमन डिग्निटी पई काम करिवो एवं फॉर नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट कि नीति आयोग रो नीतिर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और नीति मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कोन कहउछि नै कहउछि ऑल राउंड डेवलपमेंट, सब प्रकार डेवलपमेंट, ऑल परवासिव डेवलपमेंट। ऑल परवासिव रो अर्थ होला सर्वस्पर्शी। कोन कहले ऑल परवासिव माने सर्वस्पर्शी। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन, including the excluded section of society, including excluded sections of society, है including excluded section of society। जेमति कि एग्जांपल कोन ना, एग्जांपल मु कहबी women children ट्राइबल पॉपुलेशन ए मानक सब कौन दिसुन मैं लिखुची एत बड़ बड़ देखा जाऊन तो नहीं वार्ड में मुझे लिखुची एटी नो आई हैव रिटन हियर से तो मुझे लिखी सब ना कहली कौन ना ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल परवासिव डेवलपमेंट। ऑल परवासिव माने सर्वस्पर्शी, माने कौन सर्वस्पर्शी। ताले नीतिर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आउ कोन कहउछि ना, कहउछि फॉर अंत्योदया। अंत्योदया रो अर्थ अंत्योदया, अंत्योदया रो अर्थ होछि टू सपोर्ट सर्विस एंड अपलिफ्ट द पोर। पोर जो माने बिकॉज़ नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी। ये पोर मानकर अपलिफ्टमेंट करिया कहउछि, कोन कहउछि ना ये पोर मानकर अपलिफ्टमेंट करिया कहउछि, बुझिला। कौन कहउछि कहउछि पोर मानकर अपलिफ्टमेंट करिया कहउछि बिकॉज़ नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी। ताले यार ऑब्जेक्टिव कोन नइला एठी ना पॉवर्टी एलिमिनेशन। पॉवर्टी एलिमिनेशन ना, पॉवर्टी एलिमिनेशन केमिति हबो? पॉवर्टी प्रथमे पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी एस्टिमेशन प्लस पॉवर्टी इराडिकेशन, प्लस पॉवर्टी इराडिकेशन। ए दुटा हेले कोन हबो ना, ए दुटा हेले हबो पॉवर्टी एलिमिनेशन। बुझिला पॉवर्टी एलिमिनेशन केमति हबो? पॉवर्टी एस्टिमेशन प्लस पॉवर्टी इराडिकेशन हेले, बुझिला पॉवर्टी एस्टिमेशन और इराडिकेशन हेले कोन हे परिबो ना पॉवर्टी एलिमिनेशन हे परिबो। तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ अंत्योदय। तो अंत्योदय रे कोन देखुछ आमे ताले अंत्योदय सपोर्ट सर्विस अपलिफ्ट द पोर, पोर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करिया बिकॉज़ हम जानते नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी, नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी। देन नीतिश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कोन कहउची ना, कहउची एम्पावर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एम्पावर disadvantaged section of society। ये कौन कौन कहउछि एठी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ग्राउंड रे कौन कौन करिया कहउछि ना, लैंग्वेज बेसिस रे जदी किछि अछि ताकू रिजॉल्व करो, रिलीजन बेसिस रे जदी किछि अछि ताकू रिजॉल्व करो, आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी याकू रिजॉल्व करो। आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटी माने
then how to contact you? अरे बाबू डायरेक्ट कांटेक्ट करिवार कोनोसी प्रकार उपाय नाही, तुमे टेलीग्राम चैनल माध्यम रे जहाँ कनेक्ट हो पारिबो, बुझि पारलो कि टेलीग्राम चैनल माध्यम रे जहाँ कनेक्टेड हो पारिबो से टेलीग्राम लाइव एंड ऑल तो जहाँ भी क्वेश्चन अछि पचारि पारिबो, आई विल लाइव देयर सेठी मु लाइव आसे, बुझि होछि व्यस्त होनी रिजल्व करिवा जहाँ प्रॉब्लम है। ठीक अछि ताले कोन कोन के लैंग्वेज बेसिस रे, रिलीजन बेसिस रे एवं आइडेंटिटी बेसिस रे यदि कोनोसी इनइक्वालिटी अछि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया होते नीतिर ऑब्जेक्टिव। सो सिंपली इट टॉक्स अबाउट इंक्लूजन, वो कथा कहूची ये कहूची इंक्लूजन न कथा है। संजीव वर्मा तुम खाली कन्फ्यूज हो जदि मो क्लास कहूछ ताले किछि बही पड़िबनी, कन्फ्यूज होनी एते। संजीव वर्मा ना दरकार ना रमेश सिंह दरकार, ना संजीव वर्मा बही सब अच्छी ना रमेश सिंह बही सब अच्छी, बियॉन्ड रमेश सिंह पढ़िया पड़ो, बियॉन्ड संजीव वर्मा भी पढ़िया पड़ो। ताले बर्तमान मु कोन रेकमेंड करी तुम पढ़िया को मते, व्हिच वन शुड आई रेकमेंड, संजीव वर्मा और रमेश सिंह? So there are a lot of books in the market, please don't be confused. If you are attending my class, please follow the class notes only. यदि कोनोसी भी बैच रे अछंती, कोनोसी भी बैच रे अछंती इकोनॉमिक्स को नहीं कंफ्यूज होंतुनी, केवल आ केवल मो क्लास नोट्स पढंतु। क्लास नोट्स इज बियॉन्ड मेनी टेक्स्ट बुक्स, बहुत टेक्स्ट बुक बियॉन्ड बहुत कांसेप्ट ये क्लास नोट्स रे मु कवर करी। सब पढ़िवार आवश्यकता नाही, एते बही पढ़िवार आवश्यकता नाही, ओनली रिलाय ऑन माय इकोनॉमिक्स क्लास नोट्स, सेति की पढ़ हे जिवो। जो माने क्वालिफाई करथुनी टॉपर होथुनी सेति की पढ़ी की टॉपर होथुनी, तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन माय नोट्स। तो केवल नोट्स कोनोसी पर इन एनी बैच अक्रॉस बैच रो यूनिट रो सेक्शन सर्व सेक्शन एनी बैच प्लीज रेफर टू द नोट्स ओनली, ओनली नोट्स पढ़ा आ कुछ पढ़िवार आवश्यकता नाही। ठीक अछि, बही पढ़नी, बही रे बहुत जिंस अछि। देयर आर मेनी थिंग्स इन द बुक्स व्हिच नीड्स टू बी ओमिटेड, नेग्लेक्टेड। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द बुक, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द बुक, बुक रे कवर हेनी बहुत गुडे जिंस अछि, ता कोन करियो हैला। तो ये गला नीतीश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ना आउ कौन कहूँ नीतीश मॉडल ना कहूँ विलेज को मेक द विलेज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, माने विलेज को इंपोर्टेंस दबार अर्थ ये कहूँ ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन। कौन कहूँ ना ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन कथा कहूँ हैला। से कहूँ टू मेक विलेज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विलेज को इंक्लूड कर डेवलपमेंटल प्रोसेस भीतर। कौन कहूँ ना विलेज को इंक्लूड कर डेवलपमेंट प्रोसेस भीतर। नेक्स्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन कहीं ना बिकॉज दिस इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अब कहला हम कहना दिस इज कॉल्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन, दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड केते रु केते एज कहितली now 15 years through 64 years, now it is a youth stage, youth stage। तो ये कौन कहते हैं यूज इट, दिस इज द ग्रेट रिसोर्स दैट वी हैव, दिस इज द ग्रेट रिसोर्स, यूज दिस रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करियो बाय फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करियो बाय फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल हैला। गवर्नेंस, नाउ व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट गवर्नमेंट डज इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस रा डेफिनेशन कौन, गवर्नेंस रा डेफिनेशन होची व्हाट गवर्नमेंट डज, what government does is called
गवर्नेंस गवर्नमेंट जहाँ करे ताको गवर्नेंस बोली कहा जाए बुझेला कौन कहली व्हाट गवर्नमेंट डज इज कॉल्ड गवर्नेंस ये को गवर्नेंस कथा कहूची ना इट टॉक्स अबाउट गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी sustainability means long term sustainability means कौन sustainability means long term when you will be live in telegram now time कहि परिबिनी but next week रे most probably मोर आसी पारे आसीनी बहुत दिन हला you can expect in the next week इवनिंग रे आसीबो जो समय भी आसीले टेलीग्राम चैनल रे नोटिफिकेशन आसी जिवो त समस्त लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रे हम देखछे कोन ना लॉन्ग टर्म एंड environment friendly long term and environment friendly है proactive government means government for the people हम कोई people centric government लोक मानक पाई काम करियो कोन कहली पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट लोक मानक पाई काम करियो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या पर हम भाबुची पॉलिटी रे पढिथिबे बहुत अधिक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस कहा का भीतर ना सेंटर एंड स्टेट नाउ मो क्वेश्चन इज हु इज मोर पावरफुल which one is superior central government or the state government who is superior central government is superior or state government is superior who government is superior which one is superior no one is superior among central and state government no one is superior among central and the state government now state government कहाँ अंडर रे आसीबो समस्त भाबो सेंट्रल गवर्नमेंट नो बोथ टेलीग्राम लाइव रे बोथ टेक्स्ट करि परिबो वॉइस रे पचारि परिबो डायरेक्ट कथा आइ परिबो वॉइस भी अलाउड नॉट सेंटर और स्टेट या भीतर के सुपेरियर inferior nahanti rather both of them they divide their power from the constitution of india both of them they divide their power कोटू ना both of them they divide their power from the constitution of india हैला मन रख तो एठी कोन ना स्टेट को बहुत समय रेगुलेट कर दिया सेंटर बिकॉज ऑफ बाय मिसयूजिंग आर्टिकल 356 होती स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंस रूल स्टेट इमरजेंसी और जहाँ कहा जाउची कोन ना प्रेसिडेंट्स रूल और दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल हैला स्टेट इमरजेंसी बा ताक कहले कोन ना प्रेसिडेंट्स रूल अननेसेसरली लगे दउची बुझेला तो एटी को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिसयूज न करू बा अननेसेसरली ता ऊपर इंपोज न करू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिसयूज न करू बा अननेसेसरली ता को डायरेक्ट न करू सेतमे अछि नीति आयोग सो नीति आयोग रा काम होची एज अ मीडिएटर ये बैलेंस क्रिएट करेबो कहा का भीतर बैलेंस क्रिएट करेबो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इट इन सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भीतर ये कोन करेबो ये सिस्टमैटिक इंटरेक्शन करेबो कोन करेबो सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेबो ना नीति आयोग रो काम तमने एठी मु कहि परिउ नीति आयोग एक्ट्स एज अ मीडिएटर कैन आई से नीति आयोग हियर नीति आयोग एक्ट्स एज अ मीडिएटर center should support states to participate in national planning कौन करिवो center should support states to participate in national planning का सपोर्ट करिवो सेंटर ना स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करिवो टू नेशनल प्लानिंग रे पार्टिसिपेट करिया पे बुझियला स्टेट शुड कम्पीट विथ ईच अदर ना स्टेट कम्पीट करिवो इन अ पॉजिटिव सेंस ना माने करो डिजास्टर मैनेजमेंट ला देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अदर स्टेट्स शुड लर्न फ्रॉम ओडिशा ओडिशा रो अदर स्टेट माने सिखिया दरकार तो से माने ओडिशा तो सिखियो कोन को लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे नीड टू लर्न फ्रॉम ओडिशा ओडिशा रो सिखिया दरकार सो स्टेट शुड compete with each other positively compete करियो कि नहीं ओडिशा is doing better Odisha's performance is better so my state's performance should be better for example industrialization रे तमिलनाडु
then your Karnataka, Maharashtra. So these are leading states. In literacy rate, Kerala is a leading state. In agricultural production, Punjab, Haryana leading state. Disaster management, Odisha is leading state. In agro, in banana production, for example, or horticulture, Andhra Pradesh is a good state. Now, other states they have to learn in from the good performers. And what are the parameters by using which, or what are the inputs by providing which these things are increasing, production is increasing. बुझी कि नहीं? तो सेंटर एटी कौन करो ना, सेंटर शुड सपोर्ट स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल प्लानिंग. कौन करियो ना, सेंटर शुड सपोर्ट स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल प्लानिंग. स्टेट्स शुड कम्पीट विथ ईच अदर. कौन ना स्टेट कम्पीट करियो कहा से ना, स्टेट शुड कम्पीट विथ ईच अदर, निज निज सहित कम्पीट करियो. सेंटर शुड कम्पीट विथ स्टेट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट कहा सहित पार्टिसिपेट करियो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा सहित हम ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सहित कम्पीट करिया दरकार. Now making communication bidirectional. Bidirectional means on one side center and state. Now ये कुछ कि center, central government or government of India, it should not only dictate the state government. एमिति न हवा दरकार. Now ये communication bidirectional हवा दरकार. कौन कहली ये communication bidirectional हवा दरकार. ये भी ताटू सिखियो, सी भी ताटू सिखियो. Now this is called cooperation. बा मु कहबी cooperative federalism. कौन करबी एना कहबी cooperative federalism. हैला ताले ये पॉइंट बुझे गला. ये जो पांचटा पॉइंट एठी डिस्कस होची, ये पांचटा पॉइंट एवरीवन क्लियर? नो डाउट. बहुत इजी पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट. ये पांचटा जाक पॉइंट क्लियर हो गला. क्लियर? पांचटा पॉइंट क्लियर ना? नहीं डाउट. यस. अदर फंक्शंस. अदर फंक्शन सबुठ इंपोर्टेंट हूँ यार कौन ना, शेयर्ड नेशनल एजेंडा. शेयर्ड नेशनल एजेंडा. शेयर्ड नेशनल एजेंडा अर्थ कौन? शेयर्ड नेशनल एजेंडा मीन्स कहाँ का भीतर शेयरिंग? बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. स्टेट और सेंटर भीतर है क्या भीतर कहले बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. सो देखले कौन ना, शेयर्ड नेशनल एजेंडा. तो नेशनल डेवलपमेंट पाई बोथ सेंटर एंड स्टेट विल वर्क. बोथ सेंटर एंड स्टेट शall work. बोथ सेंटर एंड स्टेट shall work. बुझिला? स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड किए ना, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड इज सेंटर. स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड इज सेंटर. सेमती सेंटर रो बेस्ट फ्रेंड स्टेट. स्टेट को जहाँ दरकार सेंटर ठू नब, सेंटर को जहाँ दरकार स्टेट ठू लो. सो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी डायरेक्ट करिवनी एटा करो सेटा करो. कौन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी डायरेक्ट करिवनी एटा करो सेटा करो. रादर कौन करिवो एठी? रादर स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड इज सेंटर. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग माने
सेंट्रलाइज प्लानिंग होनी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज माने जणे ही सब डिसीजन नो सेंट्रल गवर्नमेंट सब डिसीजन नो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज माने डिसीजन गुडा समस्त मिसिक नो नै बढिया एला डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एला सेंट्रलाइज एला डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कोन कहले एला डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बुझिला देन नॉलेज हब किए नॉलेज हब क्रिएट करा जिवो फॉर नेशनल डेवलपमेंट knowledge hub to be created for national development ପାଇଁ knowledge hub create करा जिवो हैला बुझिला कि नहीं बुझिगला functions कौन what are other functions of नीति आयोग and harmonization state relation को harmonize करियो coordination रखियो better coordination state भीतर state relationship को harmonize करियो यदि कौन प्रकार dispute arise हुए ताको resolve करियो disputes resolve common disputes knowledge hub कहलियो knowledge hub माने गोटे knowledge hub create करा दियो जोटा research and development करियो that research and development will be for social development welfare ପାଇଁ बुझी होची research development हबो कोन ପାଇଁ ना welfare ପାଇଁ research development हबो then is conflict resolution कौन प्रकार conflict हेले resolve हबो conflict कौन प्रकार conflict जदि हुए से conflict को resolve करा दियो इंटरनल कंसल्टेंसी नो कंसल्टेंसी किए करियो स्टेट कंसल्ट करियो सेंटर स्टेट टू कंसल्ट सेंटर स्टेट का कंसल्ट करियो ना सेंटर कैपेसिटी बिल्डिंग मींस स्किल डेवलपमेंट कहार स्किल डेवलपमेंट हो स्किल डेवलपमेंट कहार ना स्टेट रो स्किल डेवलपमेंट हो इटी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करा दिबो स्टेट कोन ना स्टेट रो कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करा दिबो बुझिला स्टेट रो कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करा दिबो सिंपल बात ओके नो रोल ऑफ गवर्नेंस प्रो पीपल एजेंडा रे हम देखिबा एटी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल तो एटी सिंपल भाषा रे जदि मु कहबी पार्टिसिपेशन बढ़ाई दो कौन करिवो एटी ना पार्टिसिपेशन बढ़ाइबो पार्टिसिपेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करियो कहीं ना पब्लिक पार्टिसिपेशन दिस इज द पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस unless people participate you cannot resolve many issues so लोक मानक सहमति रे पार्टिसिपेशन हबो कहू सहमति रे प्रोएक्टिव प्रो पीपल एजेंडा कहली प्रो पीपल एजेंडा मींस फॉर द पीपल बा पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज प्रोएक्टिव गवर्नमेंट मींस इट विल रिजॉल्व public problems as soon as possible कौन करिवो जहां पब्लिक प्रोब्लेम अछि पब्लिक प्रोब्लेम गुडा को रिजॉल्व करिवो या काम होउची प्रोएक्टिव वे रे रिजॉल्व करिवो कौन करिवो प्रोएक्टिव वे रे रिजॉल्व करिवो पब्लिक प्रोब्लेम पार्टिसिपेशन इंक्रीज करिवो कौन करिवो इट विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक कौन करिवो ना इट विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक ये पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेबो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेले कौन हो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो कौन हो कोटा बुझिलानी पचार जोड़ा ना बुझ पाला पचार बबीता ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करिवो कहा का भितरे ना गवर्नमेंट एंड पब्लिक
ना पब्लिक को न लगे दरकार कि गवर्नमेंट ता हिसाब रे करूची ट्रांसपेरेंसी नाही so it transparency increase over whatever the government is doing government will share with public will share its own opinion public the opinion share karibo government सहित government the opinion share karibo का सहित ना public सहित inclusion कथा already discuss करिछे आमे now including everyone inclusion नो अर्थ कोन inclusion नो अर्थ हला including everyone बुझियो कि नहीं including everyone in the form of development समस्त को include करिवा in the form of development empowerment रो अर्थ कोन जो माने डिसएडवांटेज जो मानकर पावर न थाए जो माने पावरलेस एमानन को पावर प्रोवाइड करिवा जो माने पावरलेस कोन करिवो ना एमानन को पावर प्रोवाइड करिवा को कहा जाय कोन ना एम्पावरमेंट pro people as in means for the people by the people of the people लोक मानन को पाई when people will participate people participation increase करिवो कोन कहले people's participation increase करिवो pro people as in तो गवर्नमेंट जहां भी स्टेप नबो ये सब गुडा कहा पई ना फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक यस एम्पावरमेंट रो अर्थ जहार पावर नाही तांको पावर दबा तो पावरलेस को पावर प्रोवाइड करबा को कुआ जीव कोन ना पावर एम्पावरमेंट तले को मानकर पावर नै हु आर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को माने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ये मु कहबी जदि कास्ट बेसिस रे को माने ना कास्ट बेसिस रे शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी आइसोलेशन बेसिस रे को माने आइसोलेशन बेसिस रे शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन आइसोलेशन बेसिस रे शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन सेमती सेक्सुअल ओरिएंटेशन ग्राउंड रे जदि हम देखिबा के ना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जेंडर बेसिस रे जदि हम देखिबा के जेंडर बेसिस रे देखले वुमेन एंड थर्ड जेंडर वुमेन जेंडर बेसिस रे देखले कोन हबो ना वुमेन एंड थर्ड जेंडर बुझिला सेमती रूरल अर्बन ग्राउंड रे जदि हम देखिबा रूरल पॉपुलेशन बीपीएल जो माने अछंती बा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो माने बुझिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो वन एमान मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो एमान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करू एमान एम्पावरमेंट रो आवश्यकता अछि कोन ना एमान एम्पावरमेंट रो आवश्यकता अछि की एम्पावर करिवो आंकु ना आंकु एम्पावर करिवार काम होउछ एठी नीति आयोग विल टेक स्टेप्स फॉर एम्पावरमेंट नीति आयोग विल टेक स्टेप्स फॉर एम्प्लॉयमेंट नाउ एबे हम देखिबा व्हाट आर द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय नीति आयोग कोन रिफॉर्म आनी चंदी केतरा रिफॉर्म एग्जांपल देखते बुझिए जो एटीएल अटल टिंकरिंग लैब एको जे एटीएल ना एटा कोन पई ना ये स्कूल रे इट विल एनकरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ेबो इट विल इंक्रीज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कहार साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ना स्टूडेंट मानकर सो एटा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोन कहली ये कोन इंक्रीज करियो ना इट विल इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्यूरियोसिटी बढ़ेबो स्टूडेंट मानकर अटल इंक्यूबेशन सेंटर एआईसी अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये कौन करिवो ना ये स्टार्टअप गुडा को केमती क्विक एक्सपैंड करिवो इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग स्टार्टअप्स क्विकली इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट एनर्जी इधर सब इट विल प्रोवाइड 10 crore and capacity building for अटल इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट स्कीम ऊपर रिसर्च करिवो नीति आयोग को स्कीम आसीबो कने नीति आयोग इज अ थिंक टैंक so as a think tank it can advise the government it is like a consultant of the government this is government's consultant whenever required for welfare policies government will consult नीति आयोग जो अनुसार डायरेक्शन देबे government will work accordingly से अनुसार government function करियो बुझिला अटल इंक्यूबेशन सेंटर गला नेक्स्ट
रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन ये कहला एमसीआई जोटा अछि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहूची टू स्क्रैप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कहूची मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप कर दियो एंड ता बदल रे आण कोन ना आण गोटे न्यू रेगुलेटरी बॉडी कौन आनिबो ना न्यू ता बदल रे कोन आनिबो ना गोटे न्यू रेगुलेटरी बॉडी आनिबो रिफॉर्म करिया पे कहला देन डिजिटल पेमेंट मूवमेंट नाउ इट विल प्रमोट डिजिटल पेमेंट थ्रू भीम ऐप भीम यूपीआई ऐप देखो ना जो ऑनलाइन पेमेंट करछो स्कैन करके आना ऑल दोस थिंग्स बुझियो टू स्कीम्स लकी ग्राहक योजना डिजी धन जन व्यापार योजना लॉन्च टू प्रमोट डिजी पेमेंट डिजिटल पेमेंट पे आला डिजी धन मेला हेल्ड इन 100 days in 100 cities डिजी धन मेला आनिला नेक्स्ट टास्क फोर्स ऑन पॉवर्टी एलिमिनेशन एटी कोन कला ना पॉवर्टी मेजरमेंट एंड कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कोन कला एटी पॉवर्टी मेजरमेंट पॉवर्टी मेजर करिवो एंड कॉम्बैटिंग पॉवर्टी सो दैट इज पॉवर्टी एलिमिनेशन मु ऑलरेडी कहि छै पॉवर्टी एलिमिनेट करिया कहले कोन करिया पड़ियो ना फर्स्ट पॉवर्टी मेजर करिवो एवं पॉवर्टी मेजर कला परे कॉम्बैट पॉवर्टी को रिड्यूस करिवो रिड्यूसिंग पॉवर्टी एती कथा नेक्स्ट टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद पानगरिया ये आसिला 16 मार्च 2015 रे इट प्रेजेंटेड द रिपोर्ट ऑन 31 मार्च 2016 ताले ये कौन पॉइंट रखले ये कहला प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो टोटल प्रोडक्शन सिंपल लैंग्वेज रे कहले ये कहला कोन ना टोटल प्रोडक्शन केमती इंक्रीज हो ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस ऑन ईस्ट इंडिया कौन कहला ग्रीन रिवॉल्यूशन केमती बढ़ियो कौन कहला ग्रीन रिवॉल्यूशन केमती बढ़ियो फोकस ऑन ईस्ट इंडिया नीति आयोग प्लान करिया परे डायरेक्ट लोकसभा रे बिल पाई नोटिस no नीति आयोग इज सिंपली अ कंसल्टेंट ये एडवाइस दबो ना गवर्नमेंट हैज टू टेक ऑल द स्टेप्स बुझियो कि नहीं प्लान पर इंप्लीमेंट होबनी किछि गवर्नमेंट को स्टेप नवा पड़ियो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करियो सब गवर्नमेंट को ता पई पॉलिसी स्कीम आनियो पड़ियो बा लॉ फॉर्मुलेट करियो पड़ियो देन कहला ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन ईस्ट इंडिया ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्ट इंडिया ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्ट इंडिया है ना देन लैंड रिफॉर्म उनको लैंड रिफॉर्म करियो रेम्युनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स रेम्युनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स माने बेटर प्राइस लाइक एमएसपी एफआरपी एगुडा सब बढ़ेबो एमएसपी एफआरपी ये सब गुडा को इंक्रीज करियो एड्रेसिंग फार्मर्स डिस्ट्रेस को एड्रेस करियो फार्मर्स डिस्ट्रेस माने जोटा मु कहि फार्मर्स इनकम कमी जाउची डबलिंग फार्मर्स इनकम हे गला फार्मर मानकर जहाँ प्रोब्लेम अच्छे प्रोब्लेम गुड़ा रिड्यूस करिवो बा एमएसपी रिलेटेड इश्यूज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस केमती बढ़ी पारिवो एफआरपी रिलेटेड इश्यूज है ये सब गुड़ा रिड्यूस किए देखिवो नीति आयोग देखिवो देन इंडिसेस टू मेजर स्टेट परफॉर्मेंस स्टेट मानकर मु कहला कंपटीशन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कंपटीशन हवा पई एठी कोन करिवो कंपटीशन हवा पई कोन करना हेल्थ और एजुकेशन वाटर मैनेजमेंट ए सब आनला कौन ना इंडेक्स जो स्टेट मान को यू कैन कंपेयर कौन कहली एटी कंपेयर करियो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट परफॉर्मेंस को केमती कंपेयर करियो स्टेट परफॉर्मेंस को कंपेयर करियो कहले तुम इंडेक्स आनियो पड़ियो को स्टेट रो रैंक केते विभिन्न प्रकार इंडेक्स रे डिफरेंट स्टेट मानकर रैंक हमको देखियो पड़ियो बुझिला ओके पहले तो डाउट रहिला कोन दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग नीति आयोग ऊपर पूरा जहाँ थिला पाठ जति टॉपिक डिस्कस करिया तो सब डिस्कस कर जदि किसी डाउट रहिला पचार Can you live tomorrow? No.
अरे सेमती कौन हम गोटे प्रोटोकॉल अच्छी प्रोसेस अच्छी से अनुसार मत कहे मुझे कहली टेंटेटिवली आसी पारे बोली टेंटेटिवली आसो बोली कहली आसीनी जेहेतु बहुत दिन है मोर टेलीग्राम लाइव तो आसो कौन लिखा एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंपल जिनस एचडीआई रो उल्टा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे मेजर कर हेल्थ एजुकेशन आउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीवमेंट केते एमपीआई रे मेजर कर अंडर अचीवमेंट केते एती कथा बुझे लगी जा एमपीआई वर्षा कह पाठ बुझी हो बट मन रहुनी बुझा को भल लगुच ना बुझिला परे यू हैव टू प्रैक्टिस खाली क्लास अटेंड कले हम ना खाली क्लास अटेंड कले हम घंटाटे क्लास कले निजे पढ़िया पड़ो 2 घंटा तेबे जाई हम अदरवाइज हम परिश्रम करा पड़ो न्यूज पेपर पढ़ा पड़ो आंसर राइटिंग करा पड़ो तेबे जाई हम तुम भाव खाली क्लास करदेवी आ क्वालिफाई कर परीक्षा सेमती हुए लाइव केते आसो तुम टेलीग्राम चैनल से दे विल नोटिफाई डोंट वरी से नोटिफिकेशन देबे केते लाइव आसो कौन नहीं कौन यूपीएससी मेंस एग्जाम पे मॉक टेस्ट अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड केमती हम प्रिपेयर हो आग तुम सिलेबस रु पाठ पढ़ी सार बुझी सार तापर निजे आंसर लिख 200-500 आंसर लिखि सार तापर मॉक टेस्ट दो खाली मॉक टेस्ट देदेले परीक्षा हो जाए आर यू प्रिपेयर्ड फॉर मॉक टेस्ट हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस हैव यू प्रैक्टिस आंसर प्रैक्टिस किछि को मॉक टेस्ट देबी खाली पैसा बर्बाद आ किछि नहीं आग पढ़ तो तापर दब कौन कौच सौम्य नीति आयोग टीम आर नाउ सर्विंग बीपीजी राम हाँ जी राम जी करेक्ट करेक्ट ना आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दे आर नॉट सेटा देखा जाउची कौन सेठी देखा जाउची से देखुछन कि तार इम्प्लीमेंटेशन हेले तार इम्प्लीमेंटेशन स्टडी बा रिसर्च केते बेली भी परियो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ता एटा को इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च कहा जाए इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च को भी समय रही परियो ता लेवल ऑफ अवेयरनेस जानिया पई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस जानिया पई हे परियो बुझी बुझी एटा को भी समय रही परियो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च केते बेली भी हे पारे हो आउ किछि क्वेश्चन जहाँ पढ़िले ता ऊपर किछि आज कोन पढ़ले तले आज क्लास रो कोन सिखिलो मते कहलो कोन सिखिलो आज क्लास रो I have planned to give mocks. I know complete. First complete करो syllabus complete करो तापर मॉक दबो 2027 परीक्षा पई 26 रे दबो ए वर्ष दबो जून पर दियो ताले कोन पढ़िले आज क्लास रो हम पढ़ले नीति आयोग रो फंक्शंस रोल्स एंड फंक्शंस एति की पढ़ी के आसीबे आ जहा अछि पुणी हमें देखिबा नेक्स्ट क्लास करेक्ट यस कंपोजिशन भी डिस्कस होईची ना आ गोटे एडवाइस करबी आज क्लास पर समस्त जिवे लक्ष्मीकांत बही पॉलिटी बही रो नीति आयोग चैप्टर पढ़ी दे प्लानिंग कमिशन नीति आयोग दीटा जाक चैप्टर पढ़ी दे कोथरु पॉलिटी बही रु पढ़िबे इकोनॉमिक्स रे नाही तो सो दैट कनेक्ट करि परिबे तार फंक्शन रोल कोन आउट अधिक क्लारिटी आसीबे को भी कोई लक्ष्मीकांत बही रु आज समस्त नीति आयोग और प्लानिंग कमिशन ये दीटा चैप्टर पढ़िबे इज दिस क्लियर तरुण गोयल इज बेस्ट तरुण गोयल करि पारा अरे सब बही भलो एनी बुक यू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम तरुण गोयल करो भलो तो आज समस्त क्लास पर को बही पढ़िया कहली लक्ष्मीकांत बही रो रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ी ऑलराइट देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आज पई एति थैंक यू गुड नाइट